Good afternoon, students. Today's session, this brief session of ours, I'll just prefer to preface around one of the most seminal concepts under critical reasoning that we generally refer to as assumption. So, since I have already brought it to your notice that our today's session shall be worked around or has been woven around this one of the most seminal concepts of assumption. So, I'll just be putting it in bold and caption letters, assumption. What exactly is an assumption? I'll just be highlighting or putting under salient some of the special features or some of the special roles, functional roles that it has been logically entrusted to serve within the compass of critical reasoning, and they go as I go around. Just see. Assumption, just take down, just to ensure that your note taking is simultaneous to my pace of explanation of this particular concept. So, assumption technically refers to the unstated and additional piece of support provided within the structure of an argument, and that can be comfortably discovered through the application of the instrument of generalization. Just don't forget to put this particular term, this functional tool that we are particularly enjoined to put into usage while while negotiating with questions based on assumption. This particular term that I am concluding this brief definition with, that is generalization. What is it? Generalization. Okay, just drop some focus, just spare some focus for this brief definition that I have put on board in order to ensure that you are on a fine footing, you are on a firm footing, and you are nowhere precautious in your understanding of this basic conceptual structure that is to serve the most monumental purpose in exceeding or in boosting up your relative scores, in boosting up your successive scores in the competitive mocks and various national level competitive exams that you sit for at the culmination of this preparatory year. So going ahead, just take a view. Assumption technically refers to the unstated. अब यहां पे अनस्टेटेड की जगह मैंने इसको सर्कल में डाला है, अनस्टेटेड को मैं थोड़ा सा और अपेंड करूंगा, थोड़ा सा और इलैबोरेट करूंगा, और मैं यहां पे लिखूंगा एक्सप्लिसिटली अनस्टेटेड एंड एडिशनल. ठीक है, एक्सप्लिसिटली अनस्टेटेड एंड एडिशनल. एक्स्ट्रा, एडिशनल से आप क्या पर्टिकुलर सेंस ड्रॉ कर सकते हैं, एडिशनल से आप ड्रॉ कर सकते हैं, एडिशनल से आप इमीडिएटली इंटरप्रेट कर सकते हैं दैट एक्स्ट्रा. क्या है ये? एक्स्ट्रा पीस ऑफ सपोर्ट. सपोर्ट का मतलब आई होप सब समझते होंगे. आप लोगों ने 25 बार अपनी सीआर की क्लासेस में ये पर्टिकुलर टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस मस्ट हैव बीन डिस्कस्ड और put through the winding causeways of your mind, put through the finer pathways of your mind, that this additional or extra piece of support, by the term support I mean the multiple supports
that are collectively referred to as a premise, and these supports serve to justify the claim of an argument. I hope इतनी बेसिक बात, इतना बेसिक, इतना क्रॉस रेफरेंशियल, this basic cross referential must have been practiced and in a way, mastered by this time by every single preparant of this competitive examination that we all are gathering, or that we all are brainstorming in order to acquire maximum preparatory excellence of. So here I go, and यहां पे मैंने जैसे कि आपको बताया, जो अनस्टेटेड है वो एक्सप्लिसिट है, एंड यहां पे सपोर्ट का मतलब क्या है? सपोर्ट के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं एक आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर, एक आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर, उसको अपन लोग बोलते हैं मल्टीपल सपोर्ट्स, और मल्टीपल सपोर्ट्स को मिला के क्या बोला जाता है बच्चों? कलेक्टिवली दैट इज प्रेमाइस। उन्हीं सारे सपोर्ट्स में ये जो मल्टीपल सपोर्ट्स होते हैं ये सब एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होते हैं, सबके सब दिए गए होते हैं आपके पैराग्राफ के अंदर, जिसके अंदर आपका आर्ग्यूमेंट होता है, बट एक सपोर्ट ऐसा छिपा हुआ रहता है, एक सपोर्ट आपका दिया नहीं होता है बट वो होता है, ठीक है? दिया नहीं होगा बट वो होगा, एंड उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तभी मैंने क्या बोला, मैंने दो शब्द यहां पे इस्तेमाल किए, अनस्टेटेड एंड एडिशनल। एक एडिशनल सपोर्ट है और जो ऑथर ने आपको दिया नहीं है। अब यहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर ऑथर को कैसा, व्हाट एक्चुअली became of the author that he didn't prefer, or why did he play this diabolical trick with us that he didn't prefer to avail this additional support which could have further eased the process of our comprehension of this rather sophisticated CR passage? क्या कारण था उसने नहीं दिया था? मैं कारण बताता हूं। ये जो एडिशनल सपोर्ट होता है, एक्सप्लिसिटली अनस्टेटेड सपोर्ट होता है, ये रादर ऐसा माना जाता है थ्रू प्रॉपर एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन it has been brought to the finer print as one of those easiest supports which author feels below his dignity to even put to pen, because he feels the readers are intelligent, smart and sharp enough that they can immediately grasp it and take it down simultaneously while going through the multiple facets of a CR passage. I hope मेरी बात सबको समझ आ रही है। Now moving ahead, अब इधर से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया? एडिशनल होता है, अनस्टेटेड होता है, आपको मिलेगा नहीं। जैसे चार सपोर्ट्स मान लीजिए आपको दिए गए हैं आर्ग्यूमेंट के अंदर क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, चार सपोर्ट से पांचवा सपोर्ट ये सीधा सीधा लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है? नंबर 2 एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, आपको अपनी अकल से निकालना पड़ेगा, बट द थिंग इज ये सपोर्ट अवेलेबल है, आपको बस थोड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है। मैंने ये इंस्ट्रूमेंट यहां पे हाईलाइट किया है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ जनरलाइजेशन पे हम आगे किसी दिन जरूर बात करेंगे, कैसे इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ जनरलाइजेशन को हम अप्लाई करते हैं, कैसे इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ जनरलाइजेशन को हम ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेटिव मोड पे लाते हैं, इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट, इन ऑर्डर टू रीप, और इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट द मैक्सिमम आउटपुट थ्रू इट। सो अभी जैसे कि आपने देखा, अनस्टेटेड है, एडिशनल है, बट इनविजिबल है, बट कहीं से भी अननोन नहीं है। इट इज नेवर अननोन। जैसे मैंने पिछले इन्फरेंस के वीडियो में आपको बताया था, इन्फरेंस में एक अननोन एलिमेंट होता है, यहां पे अननोन कुछ भी नहीं है, अननोन एलिमेंट नहीं है। यहां पे अननोन की जगह हम क्या बोलते हैं? अजम्पशन के पास एज अ कॉन्सेप्चुअल एंटिटी किस टाइप का एलिमेंट होता है? हिडन एलिमेंट। जस्ट राइट दिस डाउन। कैसा एलिमेंट होता है बच्चों? जस्ट टेक दिस डाउन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ यूसेज और द टेक्निकल टर्म ऑफ एसोसिएशन विद विच वी फाइंड इट टू इजी and simpler as a task to feed into our logic the very go about while we actually deal with a CR passage.